Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum everyone. Today this will be our third lecture on capital budgeting techniques. In this lecture I will cover six topics. First is the potential problems under mutual exclusivity. Second is the use of net present value profiles to compare NPV and IRR techniques. Third is the use of replacement chain approach. Fourth is the capital rationing. Fifth is the post completion audit. And sixth topic is the multiple IRR problem. First, we look at the potential problems under mutual exclusivity. When the projects are mutually exclusive and they differ in terms of scale of investment, or in terms of cash flow patterns, or in terms of project life, and we use capital budgeting methods, for instance, payback period, net present value, internal rate of return, and profitability index, then there is an issue in ranking of these projects because ranking of project proposals may create contradictory results. So it is difficult for the management to select the projects when there are contradictory results. In the coming slides, we will see that how the management will decide when there are contradictory results. First, we take example of scale differences. By scale differences, we mean that two projects are different in terms of cost of investment. So here we are comparing a small project with a large project. Project S is a small project and project L is a large project. Because cost of investment in project S is small and cost of investment in project L is large. At time zero, the cash outlay for project S is $100 and the cash outlay for project L is $100,000. In the first year, both projects are providing zero cash inflows, which means no cash inflow. But in the second year, project S is providing $400 in cash inflows and project L is providing $156,250 in second year. Now we apply the four methods: payback period, net present value, IRR, and profitability index and see what are the results. In this slide, the results of payback period, internal rate of return, net present value, and profitability index are shown for both projects. If we look at the payback period, the payback period for project S or small project is 0.5 years and for project L it is 1.28 years. If we consider payback period for the section of investment, we select S project because the payback period of a small project is less than the payback period of a large project. If we look at the internal rate of return, the internal rate of return for project S is 100%, whereas the internal rate of return for project L is 25%. If we compare these projects on the basis of internal rate of return, then we select the project S because the internal rate of return project for project S is greater than the internal rate of return for project L. Third method is net present value. If we select the projects on the basis of net present value, we can see that the net present value for project L is higher than the net present value for project S. So on the basis of net present value, we can select L project and we prefer L project over the S project. And if we use profitability index, it is clear from the profitability index results that we select S project because the profitability index of project S is greater than the profitability index of project L.
But the question is that which method is preferable? Here if we see that the three methods, payback period, internal rate of return, and profitability index, are giving us the same answer, whereas the NPV results are different and they are giving us a different result. So which project now we have to prefer? The projects that are selected under payback period, IRR or profitability index, or NPV. In democracy, because three projects are providing the same results, we have to select S project. But if we look at these results technically, we know that the NPV of project L, which is almost 30,000. So if it theoretically, the total shareholders' wealth is maximized by this amount. If we select the project S, then the shareholders' wealth in totality will be increased by $231. So what would be the preference of shareholders? And what is the appropriate goal or the broader goal of a firm? You know that the broader goal or the appropriate goal of a firm is wealth maximization. If we select the project S, it will only maximize the shareholders' wealth by $231. So on the basis of NPV and considering the shareholders' wealth maximization, we select the project L and we prefer net present value in this case. Now we take an example of differences in cash flow patterns when the two projects, mutually exclusive projects, are different in terms of cash flow patterns. So here you can see that for project D and project I, the cost of investment is same. But these two projects are different in terms of the cash flow patterns. For project D, it is receiving $1,000 in first year and $500 in second and $100 in third year. Whereas for project I, it is receiving $100 in first year, $600 in second year, and $1,080 in third year. So for project D, we are receiving higher amounts in the earlier periods, whereas for the project I, we are receiving higher amounts in the later periods. Now we apply the four methods and we see that what are the results and how these results are different from each other. So when we have calculated the IRR, NPV, and profitability index for these two projects, we found that for project D, the internal rate of return is 23%, and for project I, it is 17%. NPV for project D is 198, and project I 198. Profitability index is also same. So NPV and profitability index for both projects are same. It means the wealth maximization in case of D and I is same. But the results for IRR, it is showing that the IRR is greater than for project D as compared to project I. But on the basis of IRR, we can select project D. But in real terms, both projects are adding same value to the firm. So what we have to do right now? Which project should be preferred? So now we are indifferent between the two projects because both projects are providing the same NPV at 10% rate of return or required rate of return or discount rate. So both projects are adding same value to the firm. Both projects are providing the same wealth maximization.
So in this slide, you can see that we have plotted NPV for each project at various discount rates. On x-axis, you can see the discount rates from 0% to onward. And on y-axis, you can see net present value from 0 to 600 and below 0. So what we have done here is that we have calculated the net present value for the two projects at various discount rates. And we can see that the two projects are intersected at this point where the discount rate is 10% and the net present value is $198. But if we move from this point 10% to our right, or we can say that if we increase the discount rate, the two projects NPV is now different. And if we move from 10% to 5% or 0%, we can see that there is a difference in the NPV of two projects. So the discount rate at which the two projects NPV are intersecting is also known as Fisher's rate of intersection. So this green part is reflecting NPV of I project, and this blue part is basically representing NPV of T project. So if the discount rate or the required rate of return is greater than 10%, then which project should we prefer? Obviously, the NPV of D project is greater than the NPV of I project. And if the discount rate is less than 10%, now which project we have to prefer? So you can see that if the discount rate is less than 10%, then we prefer project I because the NPV at the same discount rate, you can see at the same discount rate, NPV is greater than the uh, NPV of project T. Okay, you can see here, if you draw this, you can see that the NPV of T project is less than the NPV of project I at same discount rate. So this profile helps us to make a right decision. But if the discount rate is 10%, then we can either select project D or I because both projects are providing the same net present value. But if the discount rate is greater than the 10%, then we can select the project D, and if it is less than then we select the project I. So this profile helps us to make the right decisions. Now we take example of project life differences. When the two projects are having unequal lives. In this slide, you can see that we are comparing a long life X project with a short life Y project. Project S, you can see that at time 0, both projects are same in cost of investment because the cash outflow at time 0 is $1,000 for both projects. For project S, the cash inflows in the first year is 0. In second year, it is again 0. But in third year, it is $3,375. So the life of project S is 3 years. And now we are comparing this with the project Y, where the cash inflow in the first year is $2,000 and in the remaining years there is no cash inflow. So the life of project Y is 1 year and the life of project S is 3 years. If the two projects are mutually exclusive and their lives are different, then how the results are contradictory when we use the four methods. After calculating the payback period, IRR, NPV, and profitability index, the results are shown in this table. IRR for project X is 50% and IRR for project Y is 100%.
So on the basis of IRR, we have to select project Y. The NPV for project X is $1,536, and for Y it is $818. So because the NPV of project X is higher than the NPV of project Y, we have to select X project. And the profitability index for project X is 2.54 times, and for Y it is 1.82. So we can see here that the NPV and the profitability index both are providing the same result, but the IRR is providing a different result. IRR is providing a different result because IRR says that we have to accept project Y, whereas NPV and profitability index is saying that we have to select project X. And the wealth maximization criteria says that we have to select the project X because it will maximize the shareholders' wealth. Another way to look at things, हम जो लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे लाइव्स अनइक्वल है, जहाँ पे x की जो लाइफ थी दैट वाज 3 years and life of project y is 1 year. If we cannot replace y project with some other project, तो हम ये कर रहे हैं कि हम वी आर एडजस्टिंग कैश फ्लोज टू कॉमन टर्मिनल, क्योंकि दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना हो तो उसको हम किसी एक पॉइंट के ऊपर कंपेयर करते हैं। तो अगर x जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ 3 years है और y की लाइफ जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ 1 year है, हम दोनों को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपेयर कर सकते हैं, या तो दोनों को फर्स्ट ईयर पे कंपेयर करें या दोनों को थर्ड ईयर पे कंपेयर करें। तो हम ये कर रहे हैं कि हम जो जो अब हमारा प्रोजेक्ट वाई है उसको हम 2 years आगे कंपाउंडिंग करते हैं कि हमें 1000 रिसीव हो रहा था फर्स्ट ईयर, अगर उसको 10% रेट के ऊपर जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इफ वी कंपाउंड इट एट 10% रेट फॉर द नेक्स्ट 2 years, तो क्या रिजल्ट में चेंज आता है या नहीं आता। So what we have done here is that we have compounded the cash inflow at first year for the next 2 years, and the result is cash $2,420 at the end of third year. फिर हमने इसका IRR निकाला और NPV निकाला। तो जो IRR है इट इज 34.26% और NPV जो है इसका $818। तो IRR जो है इसका अभी भी एक्स प्रोजेक्ट से कम है, ज़्यादा नहीं है, और NPV जो है वो भी इसकी $818 है। देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। हमने इसको जो है वो कॉमन टर्मिनल पे भी देखा है, लेकिन वहाँ पे भी इसका जो है वो रिजल्ट में चेंज नहीं आया। तो हम जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स ही को ही एक्सेप्ट करेंगे। There is another approach, it is known as replacement chain approach. In the replacement chain approach, we replace the project. इसका मतलब ये है कि जैसे Y प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ 1 year है और 2000 उसकी कैश इनफ्लो हमें मिल रही है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन वी रिप्लेस द प्रोजेक्ट विद द सेम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम उसी प्रोजेक्ट को दोबारा से रिप्लेस कर देंगे विद सेम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी $1000 का प्रोजेक्ट था, उसकी कॉस्ट थी, फर्स्ट ईयर में जब हमें कैश रिसीव हुआ है इनफ्लो, तो हमने दोबारा उसकी टर्मिनेट हो गया था जो प्रोजेक्ट था, हमने उसमें दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर दी, सेकेंड ईयर में दोबारा कर दी। ठीक है, तो अगर ये 3 साल के लिए था, अगर ये 4 साल के लिए तो थर्ड ईयर में दोबारा कर देते। तो उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, डज इट मेक अ डिफरेंस और इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो हमने ये देखा है कि हमने उसको 1000 इन्वेस्ट कर दिया, टू में से 1000 लेस कर दिया, 1000 कैश इनफ्लो कर दिया, सेकंड ईयर में भी ऐसे ही हुआ, हमने दोबारा उसको री इन्वेस्ट किया, तो 2000 माइनस 1000 इट इज $1000, और थर्ड ईयर में वी आर गेटिंग द सेम कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो में भी चेंज नहीं आएगा, हर साल हम ये एक्सपेक्ट करें कि 1000 जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस प्रोजेक्ट में, तो हमें
नेक्स्ट ईयर में 2000 इनफ्लो में मिलता है। तो इसी तरह जब हमने फर्स्ट ईयर में दोबारा से री इन्वेस्ट किया तो सेकंड ईयर वी आर रिसीविंग 2000 अगेन। जब हमने दोबारा इसको री इन्वेस्ट किया तो थर्ड ईयर अगेन वी आर रिसीविंग $2000। उसके बाद हमने इसका आईआरआर निकाला, एनपीवी निकाला, तो हमने देखा कि नाउ इट्स एनपीवी इज $2238, जो कि प्रोजेक्ट एक्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये देखें, और जिसका आईआरआर जो है वो 100%। तो यहाँ हमें ये नज़र आ रहा है कि इफ़ वी आर चेंजिंग द अप्रोच, द रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि रिजल्ट चेंज हो गए, और यहाँ पे अब डिसीजन हमारा डिफरेंट हो गया। अगर हम रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच यूज़ करते हैं तो हमारा डिसीजन ये होगा कि वी सिलेक्ट वाई, वी प्रेफर वाई और एक्स। Which approach is better, NPV or IRR? If we compare NPV with IRR, so which approach is better theoretically? अगर हम theoretically देखें तो NPV is a better approach than the IRR approach. क्यों है ऐसा? अगर हमने इसकी जो स्ट्रेंथ्स को देखा था कि जो इंटरमीडिएट कैश इनफ्लोज होती हैं दे आर री इन्वेस्टेड at the required rate of return, and you know that the required rate of return is a market determined rate of return, because the market participants are asking for this rate. इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो जबकि आईआरआर जो है वो एज्यूम ये करता है कि जो उसकी री इन्वेस्टमेंट इम्प्लिसिट assumption है, ये उसकी इम्प्लिसिट assumption, तो वो ये एज्यूम ये करता है कि जो कैश इनफ्लो से री इन्वेस्ट होंगी वो आईआरआर के रेट के ऊपर होंगी। लेकिन आईआरआर का जो रेट है ये मार्केट डिटर्मिन्ड रेट नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट का अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट डिटर्मिन्ड रेट ऑफ रिटर्न। So on the basis of that, NPV is a better technique than the internal rate of return. दूसरी बात यह है कि जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो अगर कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल हो, अगर कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो का मतलब ये है कि अगर जो साइन है नेगेटिव वो एक दफा से ज्यादा दफा आ जाए। कैश आउटफ्लोज आपको पता है कि उसमें हम उसको ब्रैकेट लगाते हैं, यानी नेगेटिव आउटफ्लो है। इसी तरह अगर कैश इनफ्लोज में कहीं आउटफ्लो आ जाए, यानी नेगेटिव साइन आ जाए, तो वहां पे होता ये है कि आईआरआर उसका अगर आप डिटर्मिन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर मोर देन वन आईआरआर फॉर द सेम प्रोजेक्ट, यानी उसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो एक से ज्यादा होगा। ठीक है, उसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो एक से ज्यादा होगा। अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर आप क्या डिसाइड करेंगे? फिर आपके लिए डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा एक से ज्यादा, और ये नेगेटिव साइन एक से ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जांपल प्लांट की कहीं तीसरे ईयर में, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जाके या फिफ्थ ईयर में जाके उसकी ओवरहॉलिंग करते हैं, आपका कैश आउटफ्लो इतना होता है कि इनफ्लो से बढ़ जाता है, तो वो ऑब्वियस है कि आपका जो उस फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में नेगेटिव कैश आ जाएगा, यानी आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो ज़्यादा होगा और आपका इनफ्लो कम होगा, तो नेट जो कैश होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, या ऐसा नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कैश फ्लोज को हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। जो कन्वेंशनल कैश फ्लोज होती हैं उसमें साइन सेम रहता है, यानी उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आता। कैश इनफ्लोज हर साल आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसे कहते हैं कन्वेंशनल कैश फ्लोज। लेकिन नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि जब साइन चेंज हो जाए, एक से ज़्यादा दफ़ा साइन जो है वो नेगेटिव हो जाए। तो इन चीज़ों को देख, तीसरी चीज़ एक और भी है, वो ये है कि जो एनपीवी है वो एब्सोल्यूट वैल्यू बताती है, एब्सोल्यूट टर्म में बताती है कि कितनी अमाउंट से वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे। जबकि आईआरआर जो है इट टेल्स अस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन अमेरिकन जो है ये इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादा परसेंटेज में, तो वहाँ पे इंटरेस्ट आईआरआर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू एनपीवी, वो ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल भी एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपने आर्टिकल्स ढूंढने कुछ, और आपने ये देखना है कि पाकिस्तान में कौन सी अप्रोच ज़्यादा यूज़ हो रही है, कौन कौन सी मेथड्स अप्लाई हो रही हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा किस मेथड को जो है वो प्रेफर किया जाता है। इसी तरह एडवांस कंट्री में किसी में भी,
चाहे वो यूएस है या जापान है, वहाँ पे किन मेथड्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस है। तो ये आपने मुझे आर्टिकल जो है वो ढूंढना है, उसमें से फिर आपने उसकी एक समरी बना के मुझे एज एन असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाना। नाउ कैपिटल राशनिंग। व्हाट इज कैपिटल राशनिंग? Capital rationing basically occurs when a constraint or budget ceiling is placed on the total size of capital expenditure during a particular period. आपको पता है कि कोई भी फर्म है उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं होते, वो एक बजट बनाते हैं। उस बजट में कोई अमाउंट जो है वो उसको आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस साल में हम इस अमाउंट से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ 1 मिलियन, तो आप 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकते। तो इसी अमाउंट के अंदर रहते हुए आपने कैपिटल जो है वो एक्सपेंडिचर्स करना है। तो अगर ये स्ट्रिक्ट कैपिटल राशनिंग है तो इसका मतलब है कि आपने ये सारी अमाउंट यूज़ करनी है, और अगर आप वो यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप इनएफिशिएंट हैं, आप एफिशिएंट नहीं। तो कंपनी को चाहिए कि वो फिर जो सीलिंग है उसके अंदर रहते हुए वो वो प्रोजेक्ट्स को के अंदर इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, उसके थ्रू पे देखने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे ये अपना गोल जो है उसको अचीव कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स हम कैसे रैंकिंग करेंगे। एग्जाम्पल, for example, Julie Miller must determine what investment opportunities to undertake for BW. He is limited to a maximum expenditure of $32,500 only for 1990 जो भी year होगा। So how much he can spend in 1 year? He can only spend $32,500। तो ये उसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा वो एक्सपेंस नहीं कर सकते। So these are the projects available for PW firm. Project A, B, C, D, E, F, G. ICO means initial cash outflow. $500 is the initial cash outflow for project A, 5,000 for B, 5,000 C, $7,500 D, and 12,500 for E, 15,000 for F, 17,500 for G, and $25,000 for H. IRR 18% for A, B, 25% for B, 37% for C, 20% for D, 26% for E, 28% for F, 19% for G, and 15% for H. NPV $50 for A, $6,500 for B, $5,500 for C, $5,000 for D, $500 for E, $21,000 for F, $7,500 for G, $6,000 for H. Profitability index 1.1 for A, 2.3 times for B, 2.1 for C, 1.67 for D, 1.04 for E, 2.40 for F, 1.43 for G, and 1.24 for H. Now we compare these three methods and we will see that which method is providing the projects with higher wealth maximization. So first we are using internal rate of return method for the selection of these projects. On the basis of IRR, we have selected three projects: C, F, and E. The internal rate of return for C is 37%, 28% for F, and 26% for E. And the initial cash outflow for C is $5,000, $15,000 for F, and $12,500 for E. So what we have considered in the selection of these three projects is that first, the IRR must be higher, and secondly, we have to use all the budget that is provided to us. So if we add up all the initial cash outflow, it equals to $32,500. On the other hand, if we look at the NPV or the shareholders wealth maximization, if we add up all the NPVs of C, F, and E projects, it is about $27,000. So if we select these three projects on the basis of IRR, the total shareholders wealth will be maximized by $27,000. Now we are using NPV method for the selection of these projects. If we use NPV method, we can select first two projects, F and G, where NPV for F is $21,000 and
For G, it is $7,500. And the total cash outlay is 17,500 plus 15,000. It equals to 32,500. So we have to use all the capital we have provided. So how much shareholder wealth will be maximized? It is $28,500. When we use IRR, it was less than the $28,500. Now we use Now we use profitability index method to select these projects. If we use profitability index method, we can select four projects F, B, C, and D. If we add up the NPV of all these projects, the total shareholders' wealth will be maximized by $38,000. If we compare the results of profitability index with the other two methods, we can see that the shareholder wealth will be maximized by higher amount if we use profitability index method. So if the projects are independent and there is a budget ceiling, then we can prefer the profitability index method over the other two methods. Why? Because the main goal of the firm is the shareholders wealth maximization. जब हमने कंपेयर किया प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड को आईआरआर से या एनपीवी से और जब प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते जब प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमने ये देखा है कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के थ्रू होगी इसलिए हम प्रेफर करेंगे जहाँ पे प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट हो वहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज़ करें कंपनीज अलबत्ता जब भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने लगती हैं वो सारे मेथड्स यूज़ करती हैं और फिर उन मेथड्स को प्रेफर किया जाता है कि जिन मेथड से शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज तो इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऐसा मेथड है जो हमें हेल्प कर रहा है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने जैसे मैंने कंपैरिजन किया इसमें आप देख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एनपीवी मेथड आईआरआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो $38,000 की वैल्यू ऐड कर रहा है एनपीवी $28,500 और अगर आईआरआर मेथड यूज़ करें तो वी कैन ऐड अप $27,000 तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो मेथड है उससे हम जो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्योंकि और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हमने कैपिटल बजट जो हमें लिमिटेड कैपिटल बजट हमें प्रोवाइडेड है हमने उसके अंदर रहते हुए ही इन्वेस्टमेंट्स करने तो यहाँ पे इससे क्लियर है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये हमें बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है तो इफ़ वी यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स then we can maximize our shareholders wealth with a higher amount पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको दोबारा से ऑडिट करते हैं ताकि हम उसकी वीकनेसेस को देख सकें हम कंपेयर कर सकें वी कैन कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट एंड एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट वी कैन कंपेयर द एस्टिमेटेड बेनिफिट्स एंड द एक्चुअल बेनिफिट्स हम उसको कंपेरिजन कर सकें ताकि फ्यूचर में हम अपने बेहतर डिसीजन ले सकें तो ये पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की वीकनेसेस को और फिर हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और ये एक हमें एक अप्रोप्रिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है और फ्यूचर में फिर हम जो है वो केयरफुल हो जाते हैं और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं हम फिर रिपीट नहीं करते ये लास्ट टॉपिक है मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो होती है यानी नेगेटिव साइन एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा हो तो फिर उस प्रोजेक्ट के आईआरआर जो है वो एक से ज़्यादा हो अगर नेगेटिव जो फ्लोज हैं वो जितने ज़्यादा होंगे आईआरआर्स भी उतने ज़्यादा होंगे तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं
तो हमें ये नज़र आता है कि इसके दो IRR, एक 12.95% और दूसरा इसका 191.15%। IRR आपको पता है कि IRR पे NPV जीरो होती है, तो 12.95% के ऊपर भी NPV इसकी जीरो है और 191.15% के ऊपर भी NPV जीरो है, because we have seen that the cash flows are non-conventional, they are negative sign more than one, so there are two IRRs, दो IRRs, एक 12.95% है, 191.5। ये इसकी वीकनेस है। अगर एक प्रोजेक्ट है और उसके दो IRRs हों तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस IRR को हम जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को क्लोज करें। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको पहले तो एक तो इसको फोर से सुने लेक्चर्स को और उनको राइट डाउन करें, लिख लें अपने पास, ताकि आप क्लियर हो आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया और कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। तो टाइम को सेव करने के लिए आप क्वेश्चन को लिखें, लिख के अपने पास रखें और जब इंटरेक्टिव सेशन होगा फिर उसमें हम इसको जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको फिर हम एड्रेस करें। तो थैंक यू।